Hi, all the students. Welcome to Icon. Welcome to Icon CSCAT YouTube channel. My name is Anil Chaudhary, and I'm your coach for the VRC section of IPMAT and the various entrance exams. Now, this video, especially for the students who are going to take IPMAT 2024. तो जो भी बच्चे IPMAT 2024 देना चाहते हैं, उन सब के लिए students, we are going to start a series of such videos where we'll be discussing the most expected questions. आज का ये पहला वीडियो है. So that is the reason I'll be majorly discussing the last year's paper. ऐसे 10 questions अपन discuss करेंगे जो कि IPMAT 2023 में था. But in the coming videos, we are going to discuss the most expected questions which may come now. So anyway, students, when we talk about IPMAT, we all know that it's a very prestigious exam. 90 questions इसमें आते हैं. And out of 90 questions, 45 are from English. And 45 में से भी students आप अगर देखो तो 15 questions are based on passages and remaining 30 questions, majorly questions are based on idioms and phrases, possibly vocab, possibly grammar, fill in the blanks, jumbled paragraph. So these kind of questions we generally get in IPMAT. English का overall section बहुत ज़्यादा tough नहीं होता, but try to understand these all are competitive exams. अगर कोई सेक्शन टफ नहीं होता, इसका सीधा सा मतलब है स्टूडेंट्स उस कट ऑफ को क्लियर करना विल नॉट बी इजी बिकॉज कट ऑफ हाई हो जाता है. स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंग्लिश सेक्शन ऑफ IPMAT इंदौर, तो 45 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन मार्किंग पैटर्न सबको पता होगा, +4 and -1. So when I say +4, 45 into 4, the complete section will be of 180 marks. And last year students आप देखोगे 180 में से इंग्लिश का कट ऑफ था 125 मार्क्स. यस, तो आउट ऑफ 180 125. एंड मैथ्स के जो 45 क्वेश्चंस आते हैं, तो आउट ऑफ 180 मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स वांट द कट ऑफ वाज 51. तो ओवरऑल फॉर IIM इंदौर द कट ऑफ वाज 176 मार्क्स. तब आप देखो स्टूडेंट्स, मैथ्स का कट ऑफ निकालना बहुत मुश्किल इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत कम है, हालांकि मैथ्स के क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता. दैट डज नॉट मीन दैट वी टेक दिस पेपर फॉर ग्रांटेड बिकॉज कट ऑफ फिर हाई है, वी कैन नॉट एफर्ट स्कोरिंग लेस. स्टूडेंट्स टारगेट लेके चलो कि आउट ऑफ 180 मुझे 125 प्लस स्कोर करना है. तो वो कैसे करना है, दैट स्ट्रैटेजी वी विल कीप डिस्कसिंग इन दीज वीडियोस. ओके, तो सारे स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब करो एंड इंश्योर दैट जितनी वीडियोस हम लोग पोस्ट करें, keep watching them. So English, reasoning, maths, we are going to have the videos on all the subjects. Okay, and हम सिर्फ IPMAT इंदौर कवर नहीं करेंगे, but IPMAT रोहतक, IPMAT and CUET, इन सब को लेकर स्टूडेंट्स बहुत सारा कंटेंट हम पोस्ट करते रहेंगे. तो जितने भी बच्चे 2024 में आफ्टर 12 you want to get into these exams, yes, इस चैनल के साथ बने रहें and we will ensure that इन वीडियोस की वजह से आपका स्कोर काफी कंसिडरेबली बढ़ जाए. चलिए, गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाउ बिफोर यू गिव द आंसर, आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली कॉपी पेन लेकर बैठो. आई विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. इन सबको स्टूडेंट्स नोट करना स्टार्ट करें. तो दीज वर द एक्चुअल क्वेश्चंस ऑफ IPMAT 2023. इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का पर्पस यही है कि बिफोर वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फॉर 24, हमें यह पता होना चाहिए what was the level of the questions in 23. Okay, so that is the reason one by one हम 10 important questions को discuss करेंगे. चलिए, come on, tell me students. Yes, what is the right answer? The correct answer here is the nasty comments. What is the meaning of nasty? Good or bad? Of course, nasty का मतलब होता है bad, not good. The nasty comments made by strangers on the social media platforms about the actor made him dash. एब्सोल्युटली स्टूडेंट्स, आंसर क्या होना चाहिए? नेस्टी कमेंट्स ने उस एक्टर को क्या बना दिया? एम्बैरेस्ड, ओके, अनहैप्पी पॉसिबली. स्टूडेंट्स, व्हिच इज द बेस्ट चॉइस हियर? ओके, यस यस यस. देखो, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे अच्छी बात क्या है? दीज क्वेश्चंस आर नॉट मच टाइम कंज्यूमिंग. इफ यू नो द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रेज और एन इडियम, विदिन सेकेंड्स वी कैन मैनेज टू गिव द करेक्ट आंसर. इसलिए जितने बच्चों ने IPMAT 2023 दिया था, मैं सेंटर के बाहर था, मैंने बच्चों से पूछा, ऑल द स्टूडेंट्स वाज एबल टू से सर ऑल 45 क्वेश्चंस वी वर एबल टू सॉल्व. 40 मिनट्स का टाइम होता है फॉर दीज 45 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश
एंड स्टूडेंट्स वर सेइंग दैट कि सर सारे 45 क्वेश्चंस हम पढ़ पाए, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन वाज लेफ्ट. हम कर पाए नहीं कर पाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वी वर एबल टू गो थ्रू ऑल 45 क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स अब देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते. द करेक्ट आंसर हियर इज एल एट ईज. यस, इसका मतलब है स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल होना, एम्बैरेस्ड फील करना. तो द करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, इल एट हार्ट. ऐसा स्टूडेंट्स कोई फ्रेज नहीं होता. यस, अगर मैं इल की जगह सिक लेता हूँ, सिक एट हार्ट, ये फिर भी सही होता, बिकॉज सिक एट हार्ट का मतलब होता है अनहैप्पी होना. अंडरस्टैंड, अनहैप्पी. ओके, इल अनीक ऐसा कोई फ्रेज नहीं होता स्टूडेंट्स. एंड इल इन हार्ट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. हाँ, अगर मैं किसी पर्सन को इल हार्टेड कहता हूँ, ये फिर भी पॉसिबल है. ओके, so anyway students, if I compare all these four options, the correct answer is third option, ill at ease. Now see students, what is the importance of idioms and phrases? IPMAT इंदौर के पेपर में, CUET के पेपर में at least 5 questions you people can directly presume from idioms and phrases. अब जैसे students heart, ask a question, heart से related और कौन कौन से idioms बन सकते हैं. हम कई बार नहीं कहते हैं he has a heart of gold, a golden heart. What does that mean? और भी स्टूडेंट्स अगर अपन देखें तो हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे इडियम्स और बनते हैं. तो चलो एक छोटा सा कलेक्शन. ओके, आई हैव गॉट हियर फॉर यू. You people can pause it and just have a look over. To have a heart, okay, eat your heart out. Okay, to feel jealous, follow your heart, break someone's heart, be all heart, to lose heart. Okay, have your heart in the right place, to take heart, heal one their heart and give your heart. Okay, चलिए, so all the students इसको पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ लेना. ऐसा हमें लग सकता है कि सर ये सारे idioms हमको याद नहीं रहेंगे, but you people try to understand vocab and idioms and phrases में. We people are not supposed to by heart these things. The best part is just listen to them. Students try to understand. ये सारे question papers MCQs होते हैं. उसमें best advantage क्या है? If you have heard something, options देखोगे and you'll be able to recall, understand. तो ये subjective papers तो होते नहीं है where we have to write. तो इसीलिए बस सुनते चलो, understand. Rather than thinking about कि सर कैसे याद होगा, नहीं होगा, just keep listening. Okay? तो पहला question we have done. चलिए, now coming on students, if you ask me to give you a rough estimate for the cost of the project, cash, I would say 30 lakhs. तो क्या लगता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, आई गेस ऑफ द माइक. ऑफ द माइक जैसा नहीं होता है. हाँ, ऑफ माइक फिर भी होता है, अंडरस्टैंड. ओके, ऑफ माइक इज करेक्ट, बट व्हाट इज दिस? एनीवे स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर हियर. ऑफ माइक का मतलब होता है टू रिकॉर्ड समथिंग at a voice lower than the normal one. तो नॉर्मल वॉइस से थोड़ा सा लोअर वॉइस पे रिकॉर्ड करना, उसको कहते हैं ऑफ माइक. ओके, ऑफ द ग्रिड, यस, ये भी फ्रेज होता है. ऑफ द ग्रिड इसका मतलब है सोशल मीडिया से दूर रहना, या फिर स्टूडेंट्स यूटिलिटीज से दूर रहना. इसे अपन कहते हैं ऑफ द ग्रिड. बट एनीवे दैट इज नॉट सुटेबल हियर. ऑफ द मार्क, ऑफ द मार्क सॉरी, ऑफ द मार्क का मतलब होता है स्टूडेंट्स इनकरेक्ट. इनकरेक्ट. ओके, एंड ऑफ द कफ का मतलब होता है समथिंग स्पॉन्टेनियस विदाउट प्रिपरेशन. ओके, आई गेस यू पीपल अंडरस्टैंड स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है? ओके, इंस्टेंटली, बिना प्रिपरेशन या बिना ज़्यादा सोचे समझे. तो जब हम कुछ भी ऐसे ही बोल देते हैं उसे अपन कहते हैं स्पॉन्टेनियस. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? So if you ask me to give you a rough estimate for the cost of the project, of course, the correct answer will be second option. Off the cuff, I would say 30 lakh. इसका मतलब है बिना बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किए स्पॉन्टेनियसली मैं कह सकता हूँ 30 lakhs. तो ऑफ द कफ सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑफ द मार्क का मतलब होता है इनकरेक्ट. चलिए, कमिंग ऑन क्वेश्चन. Some big shots know how to escape the law even after they violate it. It is, however, the dash who are more often apprehended and punished. So anyway, students, by reading the sentence, we come to know that जो बड़े लोग हैं वो तो बच जाते हैं,
लेकिन जो छोटे हैं स्टूडेंट्स वो फंस जाते हैं. So now the correct answer is छोटे लोगों के लिए. Okay, which phrase we commonly use? So if you compare all the four options, anyway, third and fourth cannot be the correct answer. The only choice is between these two. And anyway, students' first option becomes the correct answer. Small fish. This phrase is not correct. We call them small fry. Okay. So the small people, small in the sense, जो बहुत ज़्यादा rich नहीं हैं. Okay. So such people. तो इन्हें अपन कहते हैं students small fry. So first option becomes the correct answer. Coming on, एक और बड़ा simple सा question. The new car has disappointed its buyers in many ways, and good mileage is its only dash. So by reading the sentence, you come to know that इस नई कार में कुछ भी plus नहीं है. Okay, there are so many disadvantages and possibly students negative aspects बहुत हैं. But the only positive side is its mileage. तो स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ में जब 10 नेगेटिव चीज़ें होती है बट एक पॉजिटिव होती है, दैट एक्चुअली बिकम्स द सेविंग ग्रेस. यस, द करेक्ट आंसर इज सेविंग ग्रेस. और आपको कंफ्यूज करने के लिए सेविंग फेस भी दे रखा है. एनीवे स्टूडेंट्स, मुझे लगता है फर्स्ट एंड फोर्थ ये तो करेक्ट आंसर हो नहीं सकता. यू पीपल कैन फाइंड आउट. तो सेविंग फेस पॉसिबली आपको कंफ्यूज करे, बट एनीवे दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर इन दिस रिगार्ड. The correct answer is saving grace. इसका मतलब ये होता है all the things are negative except this one point. उसे अपन कहते हैं saving grace. चलो एक और बहुत ही easy सा question. A few brands tailor their pants in such a way that it is easy for people with prosthetic legs to put them on. This is how they dash. IPMAT का पेपर आपको बहुत ज़्यादा confuse करना ही नहीं चाहता. And that is the reason. The moment you read all these four options, you will actually come to know what is the correct answer. And the options are not quite confusing. Yes, what is the right answer, students? Yes. The correct answer is go the extra mile. Absolutely. So when I say go the extra mile, that means to give that extra advantage. And anyway, students, when I say go the extra mile, it has multiple interpretations. For example, अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ, students, to clear these exams, you will have to walk an extra mile. You will have to go an extra mile. That means I mean to say that you will have to put some extra efforts, isn't it? So students, what is the right answer? The correct answer is second option, to give some extra advantage. Question number 6. Meena is very arrogant and class conscious. She refuses to acknowledge Sunil because she feels he's a man of dash. Students, to give the correct answer, it becomes important to understand what is the tone of the sentence. Now see what is given here. Meena is very arrogant and class conscious. Okay, अब वो सुनील को acknowledge क्यों नहीं करती? So yes, the only reason is she considers Sunil to be a man of what? Great importance तो हो नहीं सकता. अब some importance भी हो नहीं सकता. The correct answer can be either first option or the third option. Okay, he's a man of no importance, he's a man of less importance. Anyway, students, I think इनमें भी जो better choice है, that is first one. Man of no importance. तभी तो justify होगा, she is very arrogant. Okay, she does not consider Sunil even to be a man of some importance. Okay, she considers Sunil is a man of no importance. So that becomes the common usage. हम लोग students यहाँ पर confused ना हो. Less importance is not the correct answer. Okay, हम लोग जनरली ये फ्रेज कभी यूज नहीं करते. ही इज अ मैन ऑफ लेस इंपॉर्टेंस. तो सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. व्हेन आई से इज अ मैन ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, दैट इटसेल्फ मींस ही इज अ मैन ऑफ सम इंपॉर्टेंस. बट स्टूडेंट्स, जिस तरह का टोन इस सेंटेंस का है, उसके हिसाब से अगर मैं देखूं, वो सुनील को एक्नॉलेज क्यों नहीं करती है? बिकॉज शी कंसिडर्स सुनील टू बी अ मैन ऑफ नो इंपॉर्टेंस. ओके, सो दैट बिकम्स द राइट आंसर. चलिए, क्वेश्चन नंबर 7. It aggrieved me, dash my friend's serious illness. Now this actually becomes a question of grammar. And the correct answer I'll be able to give only when I understand what is the structure of the sentence. So which is the best answer? Hearing regarding, to hear regarding, in hearing, to hear of. Anyway students, ऐसे questions में जो सबसे crisp option होता है, that becomes the correct answer. So to hear of becomes the best answer. I don't have any problem with second also, to hear regarding. But anyway, students, when I say to hear of,
ओके, ये ऑप्शन सबसे क्रिस्प है, लेस लेंदी है, एंड देयर इज नो एरर इन दिस। एनीवे फोर्थ ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आईपीमैट इंदौर में आने के चांसेस हैं। द बेस्ट पार्ट इज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत टाइम नहीं लगता। एट द सेम टाइम आपके स्टूडेंट्स थोड़ा सा केयरफुल तो होना ही पड़ेगा। एंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज if you people keep reading many such sentences, or if you people keep reading a lot of things, you will actually come to know what things we have to keep in mind while framing these sentences. Try to understand, एक एक स्ट्रक्चर कोई टीचर आपको समझा नहीं सकता। सबसे बेस्ट क्या होता है, कीप रीडिंग, एक्सपोज योरसेल्फ टू मोर एंड मोर इंग्लिश। चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। Yes, all the students pause it and try to give the correct answer. The underlined phrase has to be replaced. Yes, so what is the right answer? I think not so tough. Again, a question based on grammar. अगर थोड़ा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है तो it becomes easy for us. Yes, this is when you realize that nothing much has changed, hasn't it? So when I say nothing, this becomes negative. Okay? अब स्टूडेंट जब आप काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं दैट हैज टू बी पॉजिटिव, इजंट इट? तो हियर देखिए, दिस इज व्हेन यू रियलाइज दैट नथिंग, और नथिंग के साथ हैजंट इट नहीं आता, नथिंग के साथ स्टूडेंट्स हैज इट आना चाहिए। तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। So this is when you realize that nothing much has changed and the question becomes has it. Okay, so this is the correct answer. अगर स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता तो यहाँ पर क्वेश्चन नेगेटिव हो जाता, बट अगर ये वाला पार्ट नेगेटिव है तो क्वेश्चन विल बिकम पॉजिटिव। ओके, दिस इज द पॉइंट व्हिच यू विल हैव टू कीप इन माइंड। ओके, डन। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, व्हाट इज द राइट आंसर? He always insisted to pay for the meal. वैसे तो जो अंडरलाइंड पार्ट है इवन दैट कैन बी करेक्ट, बट एनीवे स्टूडेंट्स मुझे चार ऑप्शंस में से चूज करना है, व्हिच इज अ बेटर सब्स्टिट्यूट। यस, ही ऑलवेज इंसिस्टेड, इसका मतलब है वो हमेशा ऐसा करती रहती है, अंडरस्टैंड? ही ऑलवेज इंसिस्टेड, एंड दिस बिकम्स अ सेंटेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको पता है he always insisted के साथ अपन that लगाते हैं। Anyway, fourth option we people can ignore, but at least one thing is very clear, that has to be used here. Okay, now see that he had paid, past perfect tense मैंने use किया, that she will be paying, okay, future continuous, and then students he pay, this becomes simple present. Now try to understand कौन सा tense मुझे use करना, that purely depends on the context. My aunt Seema was the most generous of all the members of our family. Whenever we went out for dinner, she always insisted, okay, that, yes, which is the correct answer? Try to understand, जब भी हम बाहर जाते हैं वो हमेशा इंसिस्ट करती कि वो पे करेगी, अंडरस्टैंड? तो ये कोई एक बार का इंसिडेंट नहीं है, दिस इज समथिंग व्हिच रेगुलरली यूज्ड टू हैपन। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स the best answer होगा, that is third option. Yes, she insisted, she always insisted that she pay for the meal, so this becomes the right answer. He had paid, ये तो past perfect हो जाएगा, और past perfect अपन कहाँ use करते हैं? To showcase, to show that something got over till a particular time in the past. Anyway students, past perfect use करने का कोई logic नहीं है। And second, future continuous use करना, will be paying, this is again wrong. The best answer here is simple present, she pay. Okay, चलिए students, question number 10, the last question of the setting of a story affects the story's plot. Now to give the correct answer here, we need to first understand what is the difference between effect and effect. Now see students, effect, this is a noun basically, and when I talk about effect, it actually becomes a verb. Yes, तो सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए that a given word belongs to which part of speech. On the basis of that only we can decide इस particular sentence में कौन सा word आएगा. And especially in IPMAT and CUET, parts of speech पर based questions तो बहुत commonly पूछे जाते हैं. So that is the reason a deep and a good understanding of the part of speech ought to be there. Understand?
चलिए अब समझते हैं स्टूडेंट्स इस पूरे सेंटेंस को. द सेटिंग ऑफ अ स्टोरी, द सेटिंग ऑफ अ स्टोरी affects the story's plot. Now see, when I say the setting of the story, this actually becomes the subject of the sentence. And the setting, it actually becomes singular. The setting of a story affects. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मुझे एक्चुअली वर्ब चाहिए. तो एनीवे दिस आंसर इज नॉट करेक्ट बिकॉज इफेक्ट इज यूज्ड एज अ नाउन. तो एनीवे स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा. अब मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं. देखिए अफेक्ट, अफेक्ट्स एंड अफेक्ट. Now see students, when the subject is singular, when the subject is singular, तो वहां पर V1 के साथ हमेशा S आता है. तो सेकेंड ऑप्शन भी कैंसल. यस, ये छोटा सा रूल सभी स्टूडेंट्स को पता है या नहीं पता है. देखो किसी भी लैंग्वेज में जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकेंड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है. स्पेशली whenever the subject is third person and singular. I repeat, whenever the subject is third person and singular, V1 के साथ हमेशा S आता है. अगर अपने को पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इस पर्टिकुलर रूल को थोड़ा सा और समझ लो, एक्सप्लोर कर लो. ओके, इसीलिए तो स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, आई बिकम द फर्स्ट पर्सन, आई बिकम द फर्स्ट पर्सन. तो आई लव यू, इजंट इट? हम यही तो कहते हैं, आई लव यू. देन स्टूडेंट्स यू बिकम्स द सेकेंड पर्सन. तो सेकेंड पर्सन के साथ भी हमेशा लव आता है. But when I take the third person he, okay, he loves or she loves, understand? So you people try to understand, whenever the subject is third person singular, verb के साथ हमेशा s आता है. अब यहाँ पर स्टूडेंट सब्जेक्ट कौन है, सेटिंग. तो इसीलिए हमने क्या लिया, वर्ब के साथ s ली. तो इसीलिए स्टूडेंट्स आंसर या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा. Now affects the story's plot, story apostrophe plot, and this says the story plots. Anyway, students, this is not correct. The correct answer is third option. Story's plot. Okay, so that becomes the correct answer. Story ka plot rather than story plot. Okay, so third option becomes the right answer. So anyway, students, ये जो difference है effect and affect में, ऐसा ही similar difference होता है advice, advice and advice. Okay, this becomes the noun and this becomes the verb. ऐसा ही difference होता है practice and practice में. Yes, SE, this becomes the noun and this becomes the verb. तो yes, ऐसे जितने भी words हैं इन सब के बारे में स्टूडेंट्स पूरी तरह से नॉलेज रखो. और ये जो एग्जाम्स हैं ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते. ये जो डे टू डे इंग्लिश है उस पर से मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एनीवे, हम इस चैनल पर स्टूडेंट्स कुछ कंटेंट के वीडियोस भी पोस्ट करेंगे where we will keep discussing the most important concepts which may actually help you in cracking these exams. But anyway students, ये पूरा वीडियो आपने देखा, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. अच्छा लगा हो जरूर लाइक करो. कीप शेयरिंग दिस मैसेज, these videos with your friends also. Okay, so see you very soon with a new video. And in case if you want to join the complete online program for IPMAT 2024, we do have that as well. So my suggestion, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी डिटेल्स दे रखा है आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ आवर कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स एज वेल. So thank you very much and see you very soon. Bye bye for now.